Hello students, now we will start with our sessions. You are boarded on the platform of Goswami's Excellence Education Foundation. I am your biology teacher. I am your guide come mentor for the subject biology. So today we will start with class 11 biology. Now think, what is biodiversity? Bio means life, diversity means variety. The variety of life is known as biodiversity. The biodiversity is the rich our life will be. It will be more sustainable. Biodiversity is a term that represents the total variety of all life on Earth. That's a big thing to sum up. Thousands of different wild habitats, millions of different species, billions of different individuals, and the trillions of different characteristics they all have. The total biodiversity of our planet is immense, which is a good thing, because the more biodiversity, the more secure all life on Earth is, including ourselves. Only when life is at its most varied, vigorous, biodiverse, can we hope to thrive. We may not know it, but we need towering forests across 1/3 of the land surface to lock away carbon and keep the climate stable. This is one example in the ocean. What are the various biodiversity? Small fishes, big sharks, various types of plants, corals, oysters. Yes, then what we can see. These are various types of things, I think. So inside the ocean, there are various types of life. Millions of lives are there. So they are very rich in biodiversity because inside the ocean we can't go often, and that's the reason it's stored. Otherwise, we always exploit everything and call the dangers. Biodiversity is the number and types of organisms present on the earth or in the globe. It is the total number of types of organisms. As for 2019 record, we have more than 7 million species in the earth. So this is the biodiversity concept. It is actually a very big concept. But we should remember, you should understand the thing. Biodiversity means what? Diversity means variety. Bio means life. There are variety of life. Each and every individual will come under this concept. Microorganism हो या big elephant हो, rhino हो या समुद्र में रहने वाले fish हो, shark हो, coral हो, everything will come under this. बड़े-बड़े trees, Africa के forest, सब कुछ इसमें आएंगे. Okay, and this is very important. जितना biodiversity ज़्यादा होगा, उतना rich होगा. Because we are somehow linked with each other. Either food chain हो, या food web हो, या फिर dependency for other reasons. We all are linked together. There are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. Okay. तो हमको ये तो पता चला कि 2019 के रिकॉर्ड के हिसाब में 7 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज हैं. ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके बहुत सारे नाम रहेंगे और नाम भी जगह जगह पे डिफरेंट रहेंगे. अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो फिर मैं एक कैट को या एक राइनो को, एक टाइगर को जैसे बोलूंगी, टाइगर को यहाँ पे जैसे बोलेंगे, आसाम में जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ, केरला में जाओ, उस नाम से नहीं बोलेंगे. इनफैक्ट हमारे गांव में एक जानवर को या फिर एक ऑर्गेनिज्म को जिस नाम से बोलते, उस नाम से जरूरी नहीं कि बाहर बोले. फिशेस, देयर आर वैरायटी ऑफ फिशेस, बहुत टाइप के फिशेस हैं और मान लो किसी को बहुत पसंद है फिशेस, ठीक है, देखने के लिए हो, खाने के लिए हो, कोई भी वजह से, तो अगर फिश मार्केट में जाएंगे
नासिक मार्केट में गए तो उसका दूसरा नाम होगा, दिल्ली मार्केट में गए तो उसका दूसरा नाम होगा, आसाम में गए तो दूसरा नाम, कोलकाता में गए तो दूसरा नाम। तो कैसे करेंगे? अगर खाने के लिए या देखने के लिए है तब तक तो ठीक है। मान लो यू आर ए साइंटिस्ट, यू आर ऑन द ट्रैक एक्चुअली। सो तुम लोगों में से कोई भी अगर साइंटिस्ट हो गए एंड इफ यू वांट ए ऑर्गेनिज्म, अभी एक चीज चाहिए, एक फिश चाहिए या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो इसके लिए तुम एक जगह से दूसरे जगह तो नहीं भी जा सकते हो, बिकॉज ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, अगर हमको मंगवाना है तो कैसे मंगवाएंगे? देयर शुड बी वन स्पेसिफिक नेम। अगर कंट्री के बाहर भी हुआ तो भी मंगवाने के लिए इजी हो, इसलिए देयर शुड बी ए स्पेसिफिक नेम, एक ऐसा स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए जो बोला तो गांव में हो या टाउन में हो, सिटी में हो, स्टेट में हो, कंट्री में हो या आउट ऑफ द कंट्री हो, कहीं पे भी हो, उस ऑर्गेनिज्म के लिए या वो थिंग के लिए वो एक ही नाम होना चाहिए, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हो उसके लिए। ठीक है, so these local names would vary from place to place, even within a country, and it will create a mesh or very big confusion. To avoid this confusion, there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world, and this is known as nomenclature. ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे स्पीसीज है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म, इफ एनीथिंग न्यू, एनी न्यू ऑर्गेनिज्म इज फाउंड, देन व्हाट इज डन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आइडेंटिफिकेशन। पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो है क्या, पहले है या पहले नहीं थे, उसके जैसा कोई दूसरे टाइप का क्रिएशन है। ठीक है, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, किस टाइप के, किसके साथ मिलता जुलता है। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज नोमेनक्लेचर। दिस इज ए स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स। वी विल डील विथ एवरीथिंग लेटर ऑन। ठीक है, लेकिन पहले क्या करना है? कुछ भी नया मिले, पहला क्वेश्चन क्या आता है? ये क्या है? दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन। ये दिखने में इसके जैसा है, दैट मीन्स दिस इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम उसको नाम रखेंगे। सो दिस इज नोमेनक्लेचर। वी हैव टू रिमेंबर identification, classification and nomenclature. For nomenclature there are two boards: International Code of Zoological Nomenclature for animals and International Code of Botanical Nomenclature for plants. Shortly it is known as ICZN and ICBN. These are the organizations who are solely responsible for naming of plants as well as for animals. And procedure to assign a scientific name to each known organism should be acceptable all over the world. And the procedure how to name the organism, कैसे उसका नामकरण करना है कोई भी organism का, उसका एक standard procedure है। Welcome to Moo Math and Science. In this video I'd like to talk about a scientific name, also called binomial nomenclature. If you were to name these animals, you could use the word cat, dog, or frog. If you lived in Germany, you would use cat, Hund, and Frusch. In order to avoid confusion, animals are identified and plants with a scientific name. This system is called binomial nomenclature. These names are important because they allow people throughout the world to communicate about animals. Scientists use international rules to name animals. These naming rules mean that every scientific name is unique. Scientific names are also designed to tell you something about the animal's relationship with other animals. The scientific names ensure that each organism has only one name, and they also ensure that such name has not been used for any other known organisms. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नाम दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हो और एक नाम सिर्फ एक के लिए ही एप्लीकेबल होगा. So there are certain rules and procedures which has to be followed. Okay? ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे सुधा हैं, बहुत सारे मनाली हैं, बहुत सारे कविता हैं,
So there should be only one. एक नाम एक ही एनिमल के लिए होना चाहिए. ह्यूमन को छोड़ो. ह्यूमन इज ए पर्सनल नेम जो है वो अलग है. Each name has two components. One is generic name and another one is specific epithet. Okay. So, and there are two components. Generic. Each name has two components. Each name has two components. So, one is generic name and second one is specific epithet. As there are two components, that's why it is known as binomial nomenclature. Bi means two, nomial nomenclature. टू नेमिंग सिस्टम. दो नाम है इसका, इसलिए एक जेनेरिक नाम है, एक स्पेसिफिक नेम है. As for example, mango. What is the scientific name of mango? Mangifera indica. This is the binomial name, kind of two names. Mangifera 1, indica. Okay, Mangifera is the name of the genus of mango, and indica is the name of the species of mango. Okay, and this naming system was given by Carolus Linnaeus. He is known as father of taxonomy. Now, what are the rules for nomenclature? Biological names are generally in Latin language. Latin is a dead language, hence Latin language is used for nomenclature of the organisms. The first word represents the genus name and the second word represents the specific name. If handwritten, if we are writing the names, हम अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो दोनों वर्ड को सेपरेटली लिखना पड़ेगा एंड दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा सेपरेटली. Mangifera अंडरलाइन, इंडिका अंडरलाइन. ओके, एंड अगर ये प्रिंटेड है, here it is printed, that's why it is in italics. The first word denoting to the genus starts with capital letter. M is capital in case of Mangifera, and specific epithet starts with small letter. Mangifera indica. M is capital, I is small. There is a space in between Mangifera and indica, and both should be underlined separately. Name of the author appears after the specific epithet. This name was given by Linnaeus for mango. That's why Mangifera indica Linnaeus. And LINN is the abbreviated form of it. So these are various rules of nomenclatures has to be followed by everyone for the standardized naming system. Let's dissect a scientific name. A house cat the scientific name is Felis domesticus. The first part describes the genus that a cat belongs to, Felis. It is always capitalized. All species that are thought to be most closely related are placed together in a genus, for example, like these cats. The second part of the scientific name, domesticus, is always lowercase, and it describes the species that is unique to the organisms. Let's look at another example. A dog, Canis lupus familiaris. The genus is Canis and the species is Lupus familiaris. How about the frog? There are over 5,000 types of frogs, so the scientific name tells you exactly which one you are talking about. The Rana temporaria. The genus is Rana and temporea is the species.